Hello students, in this lecture, formation of group is what we are going to study. I have categorized this lecture in two parts. In the first part of this video, we will be discussing the detail of the formula. Later on, we'll discuss some bunch of questions based on the concept. So let's get started. What is the meaning of formation of group? See, we all know every selection have some corresponding rejections and result in formation of group. सपोज वी हैव थ्री स्टूडेंट ए बी एंड सी दो ग्रुप बनाने हैं आपको वन कंटेंट टू स्टूडेंट एंड अनदर कंटेंट अ स्टूडेंट ओनली so if I try to list down all of their selection of two, it can be ab, it may be bc, or even it may be ca. As I told you, every selection has their rejection. AB select kiya to C will get reject. Regarding BC it will be A, and CA ke corresponding it will be B. So either you may write this expression as a 3C2 to denote the number of formation of group, or number of ways you can express these three objects into group. 3C2 आप 3C2 कह दें या आप इसे 3C1 कह दें, या even you can call it as a 3 factorial over 2 factorial into 1 factorial, which resemble like total number of objects factorial over factorial of those numbers that depends or which denotes the size of the group 2 and 1. Say if m plus n distinct objects are there, हमें दो group बनाने, one contain m number of object and another contain n number of object. So out of this m plus n object, either you can choose m object or you are free to choose n object. Both will give you the same result. And if you don't want to do that thing, and then you may simply expand your NCR formula, which directly give you m plus n factorial over m factorial into n factorial. Again, listen, factorial of total number of objects in numerator, factorial of two numbers, which denotes the size of the group m and n respectively. तो अगर आपके पास let us say we have m plus n plus p objects are there, then first of all we can separate m object from the group. M object separate करने के बाद still we have a lot which contain n plus p number of objects. So you are free to choose either n or p number of objects to get the another group. Am I right? So regarding this one, अगर हम लोग इसे mention करेंगे, then this m plus n plus p c m can be written as m plus n plus p factorial over m factorial times n plus p factorial. Now in numerator we'll have n plus p factorial, wherever denominator will contain n and p whole factorial. This n plus p will get cancelled out, and eventually we'll have the same logic as I was mentioning to you. Factorial of all number of objects or factorial of those numbers which denotes the size of the load m and p. There you go. ठीक है, तो अगर मैं आपको कहता हूँ 10 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है, तीन ग्रुप हमें बनाने हैं, स्लॉट साइज है 5 for 1. तो आई वांट आई वुड से कि विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आप सीधे ही लिख देंगे इट विल बी 5 फैक्टोरियल ओवर 10 5 फैक्टोरियल सॉरी 10 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल टाइम्स 4 फैक्टोरियल टाइम्स 1 फैक्टोरियल एंड देयर वी गो. बट प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है जहाँ हमें इक्वल नंबर ऑफ साइज के ग्रुप बनाने पड़ते हैं. कह लें कि हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स है. लेट मी जस्ट और सिंप्लीफाई दिस एग्जांपल. टू ऑब्जेक्ट्स वी हैव ए बी, हमें दो ग्रुप बनाने हैं एक और एक, तो कितने तरह से दैट टास्क कैन बी डन. so if you are following my advice which I have given you earlier, then it should be 2C1, it should be 2C1, यानी there should be a two way. बट अगर आप प्रैक्टिकली इन ग्रुप्स को देखेंगे then you will find one of the way I can express this two thing in a group is a b, wherever another ways I can express this two object in two group is b a. But both the things are same. So instead of getting two different ways तो केवल एक ही है तरीका. एक क्या है, एक ग्रुप में a है तो दूसरे ग्रुप में b है, जबकि दूसरा तरीका भी इसी चीज को बता रहा है कि एक ग्रुप में b है तो दूसरे ग्रुप में a है. यानी कि इस बार आंसर 2C1 नहीं होगा, जो आप आंसर 2 फैक्टोरियल ओवर
1 factorial times 1 factorial से दे रहे थे. This time what we need to do to get the answer and to reduce the redundancy, we have to divide this expression by factorial of that number. Factorial of that number जितने number of groups repeat हो रहे हैं. यहाँ पे दो ग्रुप है which are getting repeated, so we have to divide this expression by 2 factorial. ना अगर यही चीज में आपसे इस तरह से पूछता कि सपोज वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, आपको तीन ग्रुप बनाना है, इच कंटेन वन एलिमेंट, सो इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट. so if you again use the previous way, then it would be 3C1. आपने क्या किया, पहले तीन में से कोई एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, दो को कर दिया आपने रिजेक्ट. ना जो दो रिजेक्ट हुए थे, उन दो रिजेक्टेड एलिमेंट्स में से भी एक एक का ग्रुप बनाने का तरीका, आपने 2C1 से किसी भी एक को सेलेक्ट कर लिया एंड यू एंड अप गेटिंग वैल्यू इक्वल्स टू 6. But eventually, or on the other hand, if you look or if you see your groups, then a group contain element A, another group contain element B, third group contain element C. तो तरीका तो एक ही है तीन एलिमेंट्स के तीन ग्रुप बनाने का. सो ये सिक्स आंसर आ क्यों रहे हैं? आंसर इसलिए आ रहे हैं बिकॉज सिलेक्शन और रिजेक्शन के पीछे केसेस आर गेटिंग रिपीटेड. तो हाउ टू ओवरकम दिस केस, ओवरकम करने के लिए हमें करना क्या होगा? आई हैव मेंशनड यू अर्लियर कि जितने नंबर ऑफ ग्रुप रिपीट हो रहे हैं उसके फैक्टोरियल से आपको पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करना होगा. यहाँ पे थ्री ग्रुप्स इफ दे आर गेटिंग रिपीटेड, तो पूरे एक्सप्रेशन को आप थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड कर लें एंड इवेंचुअली यू एंड अप गेटिंग द आंसर इट इज 1. से जस्ट टू एलिबरेट इट फर्दर, हमारे पास फोर ऑब्जेक्ट्स है, इस बार दो ग्रुप बनाने हैं. अगेन ईच ग्रुप कंटेन टू एलिमेंट्स. ठीक है, तो 4C2 विल नॉट यील्ड अ रिजल्ट. अभी तक ये बात पता लगा है क्योंकि हर दो ऑब्जेक्ट्स के सिलेक्शन के पीछे अनदर टू विल गेट रिजेक्टेड. नाउ इट विल बी अ मैटर ऑफ चॉइस कि अगर आपने ए बी के बाद अगर आपने सी डी को भी सेलेक्ट किया है, देन ऑब्वियसली ए बी विल गेट रिजेक्टेड. लेकिन इस रिजेक्शन और सिलेक्शन के पीछे यू विल फाइंड के ग्रुप तो दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो क्या होगा, ओवर काउंटिंग हो जाएगी. एंड टू रिमूव दिस ओवर काउंटिंग, टू रिमूव दिस ओवर काउंटिंग व्हाट यू नीड टू डू, हमें एक्सप्रेशन को जितने नंबर ऑफ ग्रुप रिपीट हो रहे हैं विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके फैक्टोरियल से एक्सप्रेशन को डिवाइड करना होगा. दैट इज 2 फैक्टोरियल. Okay, so now if I try to generalize this expression, say I have a 2m object, each I have to form two group of m objects in each. तो कितने तरह से मैं ये कर लूंगा? It can be done by 2m factorial over m factorial times m factorial. Since two group having equal number of objects, so expression को further हमें 2 factorial से divide करना होगा. ना यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कब बढ़ जाती है? जब उन फॉर्म ग्रुप ने आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है. मान लेते हैं कि m प्लस n के आपको दो ग्रुप बनाने हैं जो कि आप ऑलरेडी बना चुके हैं बाई m प्लस n फैक्टोरियल over m factorial times n factorial ways से. So once you have your two group, let us say these are group number 1 and group number 2. उसके बाद हमें अगर deploy करना है इन दो ग्रुप को at two different places, दो different positions, then आपको करना क्या होगा? You need to simply multiply your ways. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूजली हमें करना क्या होगा? मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 2 फैक्टोरियल से. 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि दो ग्रुप हैं जिन्हें दो जगह पे आपको अरेंज करना है, इसलिए यू नीड टू मल्टीप्लाई सिंपली बाय 2 फैक्टोरियल. नाउ इस क्वेश्चन टाइम सी वी हैव 30 सोल्जर्स देयर. आपने क्या करना है? इन 30 सोल्जर्स को डिवाइड करना है 10-10 के ग्रुप में. वी हैव 10 10 एंड 10 नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच ग्रुप. so in how many ways you can do that? So first of all, पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं हम लोग. ग्रुपिंग कैन बी डन बाय 30 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल टाइम्स 10 फैक्टोरियल टाइम्स 10 फैक्टोरियल. सिंस थ्री ग्रुप्स आर गेटिंग रिपीटेड विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो आपको करना क्या होगा? यू नीड टू डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय अ 3 फैक्टोरियल. so this is how you can form your group. तो ये तो केवल आपने क्या किया है? ग्रुप को फॉर्म किया है. तो वंस यू हैव थ्री ग्रुप, नाउ हमारे पास थ्री ग्रुप है. इन थ्री ग्रुप को हमें थ्री बॉर्डर्स पे, बॉर्डर नंबर 1, बॉर्डर नंबर 2 और बॉर्डर नंबर 3 पे आपको डिप्लॉय करना है. डिप्लॉय करने का मतलब तीन ग्रुप्स का तीन जगह पे
डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह से हम लोग कर सकते हैं. यू सिंपली नीड टू मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन विद 3 factorial just which will denote the distribution of each troop. Correct. So this is how you have distributed. Now take me last questions. See, we have 200 people. हमें करना क्या है, इन 200 people को divide करना है 100 couples में. So in how many ways we can do that? So total number of peoples are there is 200. ग्रुप बनाने हैं, couples का मतलब दो दो के आपको ग्रुप बनाने हैं. So दो दो के अपने ग्रुप बनाने, कितने नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे, 100 ग्रुप्स विल बी देयर. नाउ देयर विल बी ए क्वेश्चन. अभी क्या करना है, इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप बन रहे हैं तो एक्सप्रेशन डिवाइड होगा. ना अगर आप बता देते हैं दैट मीन्स इस वीडियो का जो आपका टाइम है जो सक्सेसफुल हो जाएगा. इफ यू कैन टेल मी करेक्टली, मैं डिवाइड इसे 2 फैक्टोरियल से करूंगा या 100 फैक्टोरियल से करूंगा. If your answer is 100 factorial, then that is the right way. You have learned to form a group. All right, so thank you very much you all.